So you all know that we have now launched one product called ACCRE 8, which is mainly entry-level CLIA analyzer. तो अभी आपके पास हम लोग चाह रहे हैं ये प्रोडक्ट को और भी सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, so that you can take it forward, because being Peerless a distributor friendly organization, we want you also to promote the product along with us. तो प्रोडक्ट की बारे में थोड़ा टेक्निकल जानकारी होने से what will happen, you also will feel comfortable and you can take the discussion forward along with your customer in a basic level. उसके बाद definitely our field staff will go and field staff will promote, field staff तो बात करेंगे, our technical experts will go, our product managers for specific product, he will also visit your place, all the supports will be in place. But पहले एक initial discussion करना बहुत जरूरी है, so that we are trying. अब देखिए क्या है, 1 घंटे की सेशन है, almost 1 hour 1 hour 15 minutes, max to max 1 hour 30 minutes. इसके ऊपर ना आपका पेशेंस रहेगा सुनने का, ना मुझे बोलने का पेशेंस उतना रहेगा. तो जितना ये टाइम पे जितना हो सके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे. एट लास्ट आपके पास डाउट तो रहेंगे, देयर विल बी डाउट्स डेफिनेटली. 100% डाउट तो हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, बट जो भी डाउट्स है आप एट द एंड ऑफ द सेशन आप पूछ सकते हो, आप पूछिए, एंड एट द एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स, ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज. एक आदमी का डाउट रहेगा, जब हम ये प्लेटफॉर्म पे बताएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे को भी डाउट क्लियर हो जाएगा. ये प्योरली एक टेक्निकल सेशन है, ज्यादा प्राइस के बारे में या नेगेटिविटी अबाउट अदर कंपनीज ये सब हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको कंपटीशन का भी दिखाने का कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू कवर अप एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट द सेशन. Yeah, you must have already seen, आपने देखा होगा that we have launched this analyzer. We call it ACCRE 8, and there is a reason of giving the name ACCRE. ACCRE नाम देने के कारण है that will show you. ये basically एक entry level CLIA analyzer है. Entry level CLIA analyzer मतलब जो लोग मान के चलिए जो कस्टमर के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है, there is not too much of workload. Say for example, कैसे बताओ, जैसे they have workload of maybe 10 to 20 samples per day. वो भी मिक्सअप सैंपल, खाली थायराइड का नहीं, थोड़ा हद तक गायनिक सैंपल है, थोड़ा हद तक कार्डियक सैंपल है, थोड़ा हद तक थायराइड का सैंपल है और एंडोक्राइनोलॉजी सैंपल्स है. ये मिला जुला के जिनके पास सैंपल है, जो लोग फिलहाल एक FIA एनालाइजर जैसे कि FIA पॉइंट ऑफ केयर एनालाइजर जैसे हमारा जेटिन है, some people are using iChroma, some people are using fine care, इस टाइप के एनालाइजर जिन लोग यूज कर रहे हैं, उनको जब अपग्रेड करने की एक सिचुएशन आएगा, उनका वर्कलोड ज्यादा हो रहा है और उनको उनकी सिस्टम को ऑटोमेट करना है और भी एक्यूरेट रिजल्ट देने की एक मेंटालिटी आने वाला है उनके अंदर पे. सो इन दैट सिचुएशन इट इज बेटर टू प्रोमोट दिस काइंड ऑफ एनालाइजर. अब देखिए ये परफेक्टली जब हम बात करेंगे मार्केट की तब हम दिखाएंगे ये परफेक्टली एक मैग्नोमी की रिप्लेसमेंट तो है नहीं, but it can play a big role in medium segment of laboratories and nursing homes where the doctor, a single doctor or 2-3 doctors are running a nursing home where you can place this analyzer. We'll discuss about it in the upcoming slides. Now first to begin with I would like to discuss the instrument details. Means instrument का एक details configuration आपको देने का कोशिश करेंगे. First have a look. We call it ACCRE 8. Accurate means there is a reason behind the name, as I told. A for accurate, we consider it's a very accurate analyzer. C for convenient of using. Use करने में काफी convenience है, because traditional CLIA में there are few inconvenience. See, you all are very expert in CLIA in the market. आप सब लोगों को अच्छा तरीके से पता है मार्केट में CLIA किस तरीके से चल रहा है. So it's not that you don't know, you know very well. तो as per the user's convenience एक टेक्नीशियन भी यूज कर सकता है. मैं ऐसा तरीके से इसको प्लेस करना चाहूंगा. कंसिस्टेंट रिजल्ट है. अगर आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी देखिएगा तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज एक्सट्रीमली गुड, दैट व्हाट वी हैव चेक्ड एट आवर एंड आल्सो. इट्स अ रैपिड मींस द टेस्ट रिजल्ट्स आर मच मोर क्विकर देन अ ट्रेडिशनल CLIA मशीन, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे.
It's economical in terms of not the cost. I'm not talking about the cost of the machine or cost per test like that. I'm talking about the complete package. And that means the ownership of the machine is very economical. Means एक बार एक machine खरीदने के बाद उसको मेंटेनेंस, उसकी कॉस्ट पर टेस्ट सारे मिला के जो एक पैकेज होने वाला है 5 साल में एक कस्टमर जो यूज करने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इकोनॉमिकल प्रोपोजिशन फॉर द कस्टमर। हम ये कहने की कोशिश करता है। सो एज ए होल इट्स ACCRE 8 plays an accurate, convenient, consistent, rapid and economical proposition for the end user. तो इंस्ट्रूमेंट की जो डिफरेंट पार्ट्स है आपको अगर दिखाना चाहेंगे, इट हैज 15.6 इंच टच स्क्रीन, बहुत ही काफी बड़ा टच स्क्रीन है जो यूजर इंटरफेस के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है। एंड इट कैन स्टोर अराउंड 2 लाख टेस्ट रिजल्ट्स, 2 लाख टेस्ट रिजल्ट सेव कर सकते हैं। एंड बिल्ट इन लेविजनिंग चार्ट भी है जो कहीं भी इनको NABL एक्रेडिटेशन के लिए जरूरी होगा। प्रिंटर इज इनबिल्ट, बट चाहे तो आप बाहर से भी एक्सटर्नल प्रिंटर स्पेसिफिक मॉडल जो है हम लोग बता देंगे, बाहर से भी आप प्रिंटर लगा सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक्सटर्नल प्रिंटर इज ऑप्शनल, हम लोग देते नहीं है, बट यू कैन फिक्स इट। देयर इज इन फ्रंट देयर इज अ स्विच ऑन लाइट, स्विचिंग लाइट, द मशीन स्विच ऑन हुआ या स्विच ऑफ हुआ। एंड द इंक्यूबेशन चेंबर, दैट इज मेनली द टेस्ट एरिया। The test area, there are 6 channels in the machine. Machine में 6 चैनल है continuously, जो 6 चैनल में आप डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं। तो how to do all this, I'll try to explain you. Or there are 24 hours standby possible, and one switch is there, which is in the front side. It's not a very big machine, बहुत बड़ा machine नहीं है. It's just can be accommodate. It's just equivalent to size of what one computer as a whole, computer and desktop. I mean computer, desktop and PCU together, और कीबोर्ड माउस लेके पूरा जो स्पेस लेता है उतना स्पेस में हो जाएगा. So medium size of table is good enough to accommodate the machine. It's around 42 kg. बहुत ही heavy, highly weight machine नहीं है, and throughput is around 36 tests per hour. So all these points I'll explain you one by one. अगर आप देखते हैं तो we are placing the instrument as a benchtop compact entry level CLIA analyzer. Benchtop instrument है, quite compact and quite easy to operate. There is no additional cost or no extra consumables. This point is very important. ये आपको मैं explain करूंगा आगे जाके. कोई भी additional cost, कोई भी extra consumable कुछ भी नहीं है. Nothing else is there. User जो kit के साथ खरीद रहा है, that is good enough to run the tests, calibrations and controls. मतलब सारे काम एक ही किट के अंदर पे जो है उसी में काम चल जाएगा. You need not to buy anything. That is why we call it zero or less maintenance. कोई एक्स्ट्रा कंज्यूमेबल नहीं है, और द मशीन इज डेवलप्ड इन सच ए ब्यूटीफुल वे. आप अगर मशीन की बिल्ड क्वालिटी देखते हैं, सी वंस वी आर डिसाइडिंग द मशीन फ्रॉम आवर मार्केटिंग टीम, फ्रॉम आवर प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, वी आल्सो हैव डन लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क. हम लोगों को भी लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क करना पड़ा. So we found the machine is made so well, it is so sturdy. You'll be really feeling that it's a fantastic machine. एक लुक में जो पता चलता है वो आपको पता चलेगा. तो if you see, we are claiming 600 days MTBF. अभी जो MTBF word है ना, MTBF word थोड़ा नया है आपके लिए maybe. MTBF is generally called as mean time between failure. यानी कि what we have analyzed, even the manufacturing company has analyzed, they have used such a good spare parts or such a good spare. Say for example, there are various pumps I found they used from ACCRE. You must be knowing ACCRE pump is very good. All the tubings are from Tiger. So, or all the ICs are of very high quality, very reputed organizations they have purchased, and all the metals are extremely of good quality. So, ये जो चीज है, this makes the machine as a very appealing analyzer. And 600 days MTBF मतलब मीन टाइम बिटवीन फेलियर. दो फेलियर की बीच में, दो हार्डवेयर फेलियर की बीच की टाइम है 600 days. मींस इवन इन 600 days we did not face any difficulty. आज इवन MTBF is a very common word in different industry, but medical industry में उतना ज्यादा common नहीं है. But in IC industries and all these, MTBF plays an important role. और अगर आप reagent को देखेंगे, it's a single dose package. Single dose package means we want to mean single taste cartridge. It is a pure CLIA.
इट्स अ प्रॉपर क्लिया मेथड, जिस क्लिया मेथड ट्रेडिशनली हम लोग बचपन से देख रहे हैं, दैट स्टार्टेड, यू नो, लाइलैक हैज स्टार्टेड, या तोशो टुडे स्टार्टेड द क्लिया, पॉपुलराइजिंग क्लिया वंस इन 2000। उस टाइम से जो ट्रेडिशनल क्लिया है, ये ट्रेडिशनल क्लिया मेथड है, कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नथिंग बेस्ड ऑन इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी like what we are doing in Jetin or ICOM or Fine Care or multiple companies are doing. वैसा नहीं है, it's a pure CLIA which is cartridge based. That is the benefit. So no consumable, as I said, and maximum the detection time of different assays are 10 to 40 minutes depending on the assays. मैं आपको वो भी आगे दिखाने वाला हूँ कौन सा assay का कितना टाइम लगता है, that I will show you. Yeah. What important thing you all know, you all must be knowing that in CLIA one very important part is the substrate. हर एक कंपनी जो भी एक CLIA को प्रमोट करते हैं, they generally try to focus that point. मैं, कोई बोलता है मैं लुथेनियम सबस्ट्रेट यूज कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं you know AMPPD सबस्ट्रेट यूज कर रहा हूँ, you know everyone try to take a gauge by using the substrate. हम लोग भी अलग नहीं है. We are using ALP-APS substrate. Now, ALP-APS substrate is a new substrate. ALP-APS substrate is the alkaline phosphatase APS5 substrate. There are certain specialties, certain benefits of the substrate, which I will discuss in the next slide. Because of using that substrate, the reagent performance is excellent, and the separation method, I mean the washing method, आप सबको पता है that ELISA CLIA में washing takes a very important role, right? तो ये washing का जो रोल है, अगर washing अच्छा नहीं होगा तो it is inevitable result का reproducibility अच्छा नहीं होगा. Natural सी बात है, you know, you will not call it as a good analyzer in that case. Here in ACCRE we are using nanomagnetic particles for separation, so we call it like a M CLIA, like a magnetic CLIA, though it is basically enzymatic CLIA, to be very honest with you. But as separation procedure is based on nanomagnetic particles, हम इसको M CLIA बोल के बताते हैं. ये M CLIA तो है, ये ट्रेडिशनल CLIA है, but the benefit is that you can operate it just like a point of care machine. अभी point of care का benefit क्या होता है in general, जैसे कि जेटिन का मशीन हो या आइकोमा की मशीन हो, the benefit of point of care is that it will be single dose cartridge. अब जब भी चाहे उस टेस्ट को फाड़िए और टेस्ट को यूज कीजिए. So that benefit is there. So it is ready to use. This is the number one. Number two, cross contamination avoid हो जाता है, because आपको पता है जब आप एक प्लेट बेस्ड एलाइजा कर रहा है या प्लेट बेस्ड क्लियर कर रहा है जो माइक्रोटीटर प्लेट बेस्ड है, उसमें क्रॉस कंटामिनेशन की चांसेस होते हैं. Where here there is no chance of cross contamination. This is the number 2 point. Number 3 point is short turnaround time, यानी कि 10 से 15 मिनट पे आपको काफी सारे रिजल्ट, मैक्सिमम 15 to 25 मिनट्स पे काफी हद तक रिजल्ट आपको मिलने वाला है. So that is one part. एक लैब या एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का जो मेन इंटरेस्ट रहता है, एक पेशेंट मेरा पास आएगा और इमीडिएट एज क्विकली एज पॉसिबल दे विल गेट द रिजल्ट, आई विल ट्रीट हिम एंड दे विल गो आउट फ्रॉम माय लैब, आई विल गिव द मेडिकेशन. ये जो डिजायर एक डॉक्टर का या एक लैबोरेटरी ओनर का रहते हैं, that will be possible if the turnaround time of the lab is lower. To be very honest with you, this is the benefit. The turnaround time is very short in the machine. You will see it in forward, all-in-one design and no consumable. यानी कि बहुत सारे क्लिया में आपको डेफिनेटली पता रहेगा, there are multiple consumables. Like कोई बोलता है भाई वॉश बफर खरीद लो, भाई डायलुएंट खरीद लो, भाई विटामिन डी करना है तो प्री डायलुएंट खरीद लो, कोई कहता है भाई पिपेट अलग से खरीदो. There is no buts like that. Everything is inside the pack. ये मैं बार बार स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड द पैक. जो पैक हम लोग ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर पे ही है. सो इट डज नॉट इंक्रीज द अल्टीमेट कॉस्ट पर रिपोर्टेबल टेस्ट. बहुत लोग कॉस्ट पर रिपोर्टेबल टेस्ट ओपनली नहीं प्रमोट करते, नहीं बताते. बट व्हाट वी आर एक्चुअली प्रोपोजिंग यू इज द कॉस्ट पर रिपोर्टेबल टेस्ट, इज नॉट द सीपीटी ऑन. यानी कि क्यूवेट की कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, टिप की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, बफर की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इवन control calibrator की cost भी included है. That will show in the coming slides once again. जो मैं आपको बता रहा था, APS5 substrate, the ALP means all of you know that is alkaline phosphatase, and APS means actually it's a chemical adenosine 5 phosphosulfate,
adenosine 5-phosphosulfate. I repeat, adenosine 5-phosphosulfate, which is actually illuminating agent, to be very honest with you, which is tagged with ALP. That's why the total substrate name is called as ALP APS5 substrate. इसका फायदा क्या है? The benefit is that first, very quick response, like very quick light emitting time. That means incubation time कम होने वाला है. आपको ग्राफ देख के पता चल रहा है what I am showing here. 0 to 10 minutes, many assays, they spike up the RLU. RLU is called as relative light unity. What is a measurement of light, measurement unit in CLIA? You must be knowing. जैसे कि बायोकेमिस्ट में एब्जॉर्बेंस या ओडी हम मेजर करते हैं, वैसे ही कोई भी क्लिया एनालाइजर दुनिया की वो आरएलयू मेजर करते हैं, जैसे कि एब्जॉर्बेंस मेजर करता है, राइट? सो आरएलयू मैंने जैसे बताया रिलेटिव लाइट यूनिट. सो रिलेटिव लाइट यूनिट जितना जल्दी होगा एक क्लिया की किट उतना अच्छा होने वाला है, बिकॉज उसकी इंक्यूबेशन टाइम कम होने वाला है. और जितना आरएलयू स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा होने वाला है. सिमिलरली हियर द लाइट इंटेंसिटी अगर आप देखते हैं, ड्यू टू यूज ऑफ ALP APS5, the light intensity is extremely strong. It is much better than the traditional substrate of AMPPD, which is traditionally used in multiple CLIA analyzer. उससे काफी हद तक अच्छा है. So ultimate जो फायदा होता है, that is short light emitting time, that means short incubation time, strong RLU signal intensity. Strong RLU signal intensity होने के कारण the sensitivity of the kits are very good. Say for example, हमारे पास जो high sensitive troponin I है, HS troponin I, you will find the sensitivity is 0.005, which is pretty sensitive. यानी कि बहुत कम वैल्यू का troponin I भी रहने वाला है, तो it is going to detect that. So the strong RLU signal helps in that. Long duration, the signal is stable for quite a long time. So ultimately result आप अभी लीजिए या थोड़ा सा बाद में मशीन रिजल्ट ले, उसमें डिफिकल्टी नहीं होने वाला है. एंड बेटर लाइट स्टेबिलिटी. तो ये सब कारण के लिए अल्टीमेटली द बेनिफिट इज फॉर द यूजर दैट दे गेट बेटर सेंसिटिव रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट, बेटर रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड शॉर्टर इंक्यूबेशन टाइम, व्हिच रिड्यूस देयर टर्न अराउंड टाइम. तो ये कारण के लिए अल्टीमेटली द टोटल प्रपोजल बिकम्स मच अपीलिंग इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर. आप इस पॉइंट को काफी हद तक प्रमोट कर सकते हो जब आप अपनी कस्टमर के साथ ये चीज डिस्कस कर रहे हो. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, मैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर की थोड़ा पार्ट्स आपको दिखाना चाहूंगा. दैट इज फर्स्ट इज दैट दिस इज द ओपन इंस्ट्रूमेंट. हम लोग एक मशीन को ओपन किए थे एंड वी वांटेड टू शो यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस मशीन के अंदर पे कोई भी लिक्विड पाथ नहीं है. लिक्विड पाथ विद हाइड्रोलिक सिस्टम. अगर लिक्विड पाथ होते हैं, बहुत ज्यादा ट्यूबिंग होता है, द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस, इट इंक्रीजेस द प्रॉब्लम्स इन द मशीन. सो इट इज ओनली बेस्ड ऑन सम मैकेनिकल मूवमेंट. जैसे मैकेनिकल मूवमेंट होते हैं, अल्टीमेटली यू शैल फाइंड द मशीन्स आर इन मच बेटर कंडीशन. द MTBF इज लॉन्गर, दैट इज फेलियर होने की चांसेस कम है. आप लोगों ने देखा है दैट जैसे कि एलाइजा का वॉशर और एलाइजा रीडर generally does not, especially very specifically ELISA washer, it goes long time in the customer place. Customer place में बहुत काफी चलता है क्योंकि ELISA washer में बहुत ज्यादा लिक्विड पाथ नहीं होते हैं. ELISA रीडर में भी बहुत ज्यादा लिक्विड पाथ नहीं होते हैं. तो नेचुरली लिक्विड पाथ कम होगा तो मशीन ज्यादा दिन चलने की चांसेस रहते हैं, ज्यादा स्टेबल होने की चांसेस रहते हैं. सो दैट बेनिफिट इज देयर. So this is the part what is opened, that integrated sample and wash module. इसी में अल्टीमेटली प्रीकिंग वगैरह जो होते हैं, इनकी जो टोटल किट के ऊपर, आई मीन कार्टेज के ऊपर जो कवर वगैरह है, यू डिड नॉट टू पील ऑफ एनीथिंग. अपने से मशीन आने वाला है. मशीन का जो प्रोब है, द प्रोब विल प्रिक अप all the whole required holes and they will start aspirating and dispensing by the wash modules. So it is very comfortable. और इंटीग्रेटेड सैंपल एंड रिएक्शन एंड इंक्यूबेशन मोड ये आपके सामने है, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है. सो ओवरऑल मशीन इंस्ट्रूमेंट का जो फीचर्स अगर आप देखेंगे तो इट इज अ सिंगल सर्व ऑटोमेटिक क्लिया इम्यूनोएस्से एनालाइजर. एज आई सेड, मॉडल नेम इज ACCRE 8. द मोस्ट इंटरेस्टिंगली, यू कैन यूज होल ब्लड, serum and plasma as a sample.
सबसे बढ़िया बात है, आपको हम आगे दिखाएंगे दैट इन आवर ट्रोपोनिन आई यू कैन यूज होल ब्लड एज ए सैंपल। मेनी अदर कंपनीज आप शायद होल ब्लड नहीं यूज कर पाते, आपको सीरम यूज करना पड़ता है। जैसे ही आपको सीरम यूज करना पड़ता है, द टाइम ऑफ ट्रोपोनिन आई टेस्टिंग इंक्रीजेस एंड अल्टीमेटली द पेशेंट रिजल्ट्स टेक्स लॉन्गर टाइम, जो मकसद नहीं है। सो हियर यू कैन यूज होल ब्लड। नाउ रिजल्ट यू कैन गेट फ्यू पैरामीटर्स इन 10 मिनट्स, बट टिपिकली हम लोगों ने अभी तक जो पैरामीटर लॉन्च किया हुआ है उसमें 15 मिनट इज द लोएस्ट टाइम। Speed maximum it can perform 36 tests per hour and 6 samples per batch you can run. Screen size, consumption, consumables, all those things we have told already. There is nothing very specific into it. Already all these points are discussed. So now I'll go to the reagent segment. In the reagent segment, we have opened some reagent kits and would like to show you the reagents. See, this is the box of PCT. PCT का total kit box है ये, and inside the box there are packs, like in plastic packs we give the reagent cartridges in this format. There are multiple plastic packets like this. It's a solid plastic cover, and then we provide calibration code, which is a calibration code for each calibrator. And we provide the registration QR code. From registration QR code and calibration code, you will get your customer will get the master card. We provide 3-level calibrator and 2-level quality control. So with each pack 3 calibrator और 2 quality control provide होते हैं. Then you can ask me, then why you are providing calibration code, right? The calibration code is basically for the master card. जैसे ही मशीन में जो बारकोड रीडर रहते हैं, बारकोड रीडर जैसे ही कैलिब्रेशन कोड या क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, इट टेक्स द मास्टर कर्व व्हिच वाज सेट इन द फैक्ट्री। उन्फो की फैक्ट्री में जैसे मास्टर कर्व सेट हुआ, मास्टर कर्व को हम सेट कर लेते हैं मशीन। देन वी रन द कैलिब्रेशन बाय 3-level कैलिब्रेटर जस्ट टू सेट द check the master curve is matching with the calibrator values or not. So it's kind of a validation of calibration. It is not a real calibration. Real calibration में तो आपको 6 लेवल की कैलिब्रेटर चाहिए, इसमें खाली 3 लेवल कैलिब्रेटर प्रोवाइडेड है, राइट? सो ये 3 लेवल कैलिब्रेटर चला के मास्टर कर्व में हम लोग मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मास्टर कर्व में मैच हो जाते हैं, मशीन एक्सेप्ट्स द कैलिब्रेशन एंड गोज फॉरवर्ड फॉर द टेस्टिंग। ऐसे चीज होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द पैकेज इनसाइड इज। Then if you want to run the quality control is there, 2 level 1 and level 2. So quality control chala ke you can validate the assay and go forward for the testing. That is the protocol going to. Now along with each kit, we are providing disposable tips, and believe me, these disposable tips are uniform. Uniform बोलने की मतलब ये है, TSH के लिए भी जो disposable tip है, T3 T4 के लिए भी वही disposable tip है, या AMH या troponin I या विटामिन B12 या विटामिन डी जो भी हो, सबके लिए एक यूनिफॉर्म डिस्पोजेबल टिप, जो काफी दूसरे मशीन पे ये फीचर्स नहीं रहते, अलग अलग टिप रहने की चांसेस रहता है और टिप अलग से खरीदना पड़ता है। whereas it is a perfect disposable tip which is provided along with the tip. Now sample diluent, कुछ टेस्ट है जैसे कि विटामिन डी, आप मान के चलिए विटामिन डी में you may need to pre-dilute the samples, so we provide the pre-diluents, I mean sample diluent along with the kit wherever it is required. So जहां पे जरूरत है सब में प्रोवाइड नहीं होता है, जहां पे जरूरत होता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। Apart from that, 2-level quality control, 2 bottles per box we are providing. So this is the full package. Ultimately the front page, पहले वाला पेज और इस पेज में जो है सारे कुछ as a package, it goes to you and you forward to your customer. That is our purpose. Okay. Now kit configuration and machine configuration, अगर आप मशीन को थोड़ा जूम करके देखेंगे, then this is the incubation chamber जो एक स्लाइडिंग डोर के अंदर पे रहते हैं, and this is the waste box. Waste box भी साथ में प्रोवाइडेड रहते हैं, an extra which our engineer will set, and this is the metal platform जहाँ पे सारे टेस्ट हो रहा है, and this is the tip rack जहाँ पे टिप को सेट करना पड़ता है जो which we are providing, and then this is the reagent rack at the end. Right? So
this is without the reagent, and now if you see, if you put the reagent, this is going to be like this. Okay, you need not to peel off the cover, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें barcoding है. Already seeing the barcoding, machine will identify what reagent it is. You need not to do anything. It is just like a layman can operate the machine. Okay, and it will come automatically, and its pricker will prick the, you know, all the wells and start the test. So that is what it is going to. Okay, now going forward for the more reagent information, अगर आप देखते हैं सिंगल डोज पैकेज है, रेडी टू यूज है कंप्लीटली, जैसे आपको बताए थे. इट्स अ इंटीग्रेटेड रिएजेंट स्ट्रिप डिजाइन, सब कुछ इसी रिएजेंट स्ट्रिप के अंदर में ही है. All contents are in one reagent pack. There is nothing consumable, nothing is extra required. At this moment, we are selling 60 strips per kit pack size. But you know, in the coming days, we are thinking, we need your suggestions, of course, because you are our partner and you can help us to develop the things better. We are thinking that we'll launch 36 tests also for specific few parameters, जहाँ पे workload कम रहते हैं, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, इनकी वर्कलोड मीडियम और कस्टमर के पास बहुत ज्यादा नहीं रहते. सो स्पेसिफिक फ्यू पैरामीटर्स, you know, we can launch 36 tests also. And calibration, I mean calibrators are also included, and all the cartridges are aluminum foil strip cover is there, and minimum 12 months shelf life रहते हैं. You know, immunoassay shelf life is not like biochemistry that 2 years or more than 2 years it will be there. 12 months to 18 months is generally the shelf life, and we are providing that. Built-in automatic barcode scanner, which will be scanned, and Mastercard information will be taken from the scanner. You need not to do anything. Okay, and the pipetting tip is also provided along with each pack, जो मैंने आपको बताया. Now, going forward once again. Yes. So ये प्रैक्टिकल एक फेरिटिन जो टेस्ट स्ट्रिप है उनकी एक फोटोग्राफ है. दिस इज द रिएक्शन ऑयल, जहाँ पे रिएक्शन होता है, बट आपकी टेक्नीशियन को करने के लिए तो कुछ है ही नहीं. दे हैव टू जस्ट होल्ड इट इन द हैंडल एंड प्लेस इट इन द रिएक्शन एरिया, और यूज अ माइक्रो पिपेट टू पिपेट द सैंपल्स इनसाइड द सैंपल ऑयल. दैट इज ऑल. बैलेंस, कार्टेज लॉट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, दैट मीन्स assay name, barcode, that you know, or reading oil, all this machine will do by itself. Only एक चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा, before the testing they should not play with like this, you know, they should not reverse it too many times, because the problem is that it's a magnetic nanoparticle. Magnetic nanoparticle should not be mixed too much, it should be stabilized. So that is a criteria for any magnetic CLIA. So here also the similar suggestions our technical team is giving, that to keep it stable. And if you see the inside part of the test of the cartridge, so इसमें first sample oil है, and in fourth cup there is labeled antibody, जो test आप करने वाले उसकी antibody solution है. Then there is nanomagnetic particles. Few places are free because these are used for mainly, you know, these are used mainly for you know, the washing part, because washing में काफी time, you know, चीज इधर उधर करना पड़ता है, so that is getting used. And then wash liquids are provided inside itself. You need not to do anything from outside, as I said. Then at last the substrate, that is ALP APS5, that is sorry APS5 substrate is given, because antibodies are labeled with ALP and APS5 substrate जो मैंने आपको बताया, so that is provided separately. Now after the substrate is mixed, then the signal start, and then the whole solution is transferred into reading well, जहाँ पे reading होते हैं and RLU signal measure होते हैं, right? मुझे पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं, but it's pretty easy, very easy to understand, step by step, you know. इन ये कार्टेज के अंदर ही सारे टेस्ट हो रहा है, आपको बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, मशीन बाहर कुछ नहीं कर रहा है, कार्टेज के अंदर पे टेस्ट कर रहा है, मिक्स कर रहा है, वॉशिंग कर रहा है, देन सबस्ट्रेट मिक्सिंग कर रहा है, एंड एट लास्ट रीडिंग ले रहा है. So all the 10 to 14 steps what is required for CLIA, all steps are done within the cartridge itself. No need to do any external things. Okay.
This is something new idea. That's why we are taking little time and trying to explain you in step-by-step method. Now, few cautions that which we would like to update you, that regarding reagent storage and transport part. What we suggest that it should not be turned over continuously, because because magnetic particle अंदर पे है, बहुत ज़्यादा shaking, और आप जब अपनी कस्टमर को किट भेज रहे हो तो किट को थोड़ा स्टेबलाइज करके भेजना ज़्यादा बेटर रहेगा. It is very important to store at 2 to 8 degrees Celsius. Please don't expose it to room temperature too much, because it's immunoassay kit at last based on antigen and antibody. It is already well known, but we suggest always you keep it at 2 to 8. You should not freeze it before, because if you defreeze it, freeze means I want to mean refrigerated ki defrigerator mein mat rakhiye. If you freeze it, it will lose its quality and there will be chemical reaction and ultimately the kit can go bad. So that chances are always there. As per our technical team, they suggest आप ट्रांसपोर्ट की इमीडिएटली मिनिमम एक दिन आप टेस्ट मत कीजिए, लैब में रहने दीजिए कोल्ड में, कोल्ड चेन पे. It is better because of its magnetic particle based, and we are new in CLIA operation. आपको सबको पता है, you all of our distributors, so you know pretty well that, so we don't want to take much chance. जैसे हम लोगों को एक लेसन मिला तो आपको भी हम लोग को फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. मिनिमम for 48 hours they are saying, but we say 24 hours. अब एक दिन तक रख लीजिए कस्टमर पॉइंट पे, don't shake it vigorously, then use it comfortably. Okay, so that is what is our opinion. Now, as a reagent feature, I hope I have explained you all the points, but still I would like to remind, chemiluminescence principle में है, substrate APS5 है, the method is ALP APS5 substrate method, and magnetic nanomagnetic separation है. Assay time is 10 to 35 minutes, not 35 actually, 40 minutes. Vitamin D takes 40 minutes. Its stability minimum 12 months का है, or 4 to 8 weeks calibration validity time is also there, so you don't have much problem. And calibration is 3-point calibration, and in duplicate we are recommending our technical team. And only just manual part which you not need to do, sample डालना है, that's all. Nothing is required. A technician can do. It's automated. Fully automated, nothing is required. As I said, storage condition is 2 to 8, preferable. At present 60 test pack size, but we are really sincerely thinking of 36 tests, but we don't know when we'll be able to launch it. So presently 60 tests we'll consider and continue. Now going forward, the main interface of the machine, आपको just एक software का एक छोटा सा screenshot दिखाने की कोशिश कर रहा है, nothing else. Software is pretty simple. कुछ भी नहीं है, just few clicks. Number 1 is sample test, number 2 is calibration test, number 3 is QC test, number 4 is search menu for historic data. That means the old patient data अगर आपको देखना है तो search में जाके आपको देखना पड़ेगा. Number 5 is setting of reagents, जहाँ पे एक टेक्नीशियन को डॉक्टर के लिए कुछ ज्यादा करने का नहीं है. Maximum will be done our technician, our engineers and our field people, and at last exit or shutdown of the machine. So this is so simple. Just few steps, okay? Nothing very complicated. Now going forward to the promotional materials, हमारे पास अभी हमारे brochures है. I hope our field staff has given all of our brochures. अगर ये if they have not given, please ask us. At last there will be a phone number. Please send a small WhatsApp in the phone number or in our feedback form that you need brochures. We will send it to you. Because there's a fast promotion, brochure के बगैर तो बात ही नहीं हो पाएगा, right? In brochure मैंने अभी तक जो describe किया वही चीज है, कुछ अलग नहीं है. First page is something like that, जहाँ पे ACCRE 8 और उनकी basic feature लिखा हुआ है. If you open up the flap, in the left side, it is explained why it is excellent as CLIA, and then in right side it is written why it is good as point of care machine, and 4-step assay procedure. That's all is written. And in the third page, the basic feature of the instrument and some basic information which is required for a purchaser, I mean a buyer or a doctor to know, that is there. And last page, very importantly, all the test panel is there, which is most important. सारे test panel जो क्या test अभी फिलहाल हमारे पास available है और हम लोग क्या और कुछ ही महीना पे लेके आने वाला है और
क्या हम लोग और 1 साल तक लेके आने वाला है. सो देयर आर 3 स्टेप्स लाइक अवेलेबल, in process which is coming soon, or in development which will take little longer time. So all the required information is there. Now I'll try to open a video in front of you. Have a look on that. I hope you are able to listen the sound. One minute. तो अभी तक मैंने डिस्क्राइब किया, वो भी इधर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग. द टेस्ट प्रोसीजर, हाउ इट इज टेस्टिंग इज शोन. The washing part which is happening, multiple level washing, and last the ACCRE pipe substrate is mixed and then it is sent to the testing. It's a gel-like magnetic field design, so little shaking will not disturb. मैंने आपको एक ही चीज दिखा रहे थे. You can take a screenshot of this phone number, and at last also will show you once again. ये वीडियो ना अवेलेबल है, it's available in YouTube, it's available with us. अगर आपको प्रमोशन के लिए अपनी जो प्रोस्पेक्ट है, अपनी जो यूजर है जिनको आप ये भेजना चाहेंगे, आप अगर भेजना चाहते हो, प्लीज आस्क इट फ्रॉम आवर फील्ड स्टाफ, प्लीज आस्क इट फ्रॉम अस, वी विल प्रोवाइड इट टू यू. यू सेंड इट. इनसे एक यूजर जो होने वाला है उनको एक इनिशियल इंटरेस्ट तो जगने वाला है. Then of course discussions, pricing, negotiations, all this will happen, but this is the first interest point जो हमारे पास available है. You can get it from us. Now regarding the USPs जो आपको अभी वीडियो में दिखा, just to explain you, it's a compact and cost effective proposition. It's a 30% lesser size than the traditional bleed CLIA analyzer. अगर आप देखते हैं, our assessment says that it is less than 50% cost of traditional CLIA machine. बट फिर भी इट्स अ वेरी डिबेटेबल पॉइंट. मैं इस पे डिबेट करना हम चालू करेंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है. बट एनीवे, वी प्रपोज द कॉस्ट ऑफ द मशीन, दैट मींस द रियल परचेस कॉस्ट. मार्केट पे क्या ऑफर दे रहा है एक कंपनी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. एक रियल मशीन बनाने की जो कॉस्ट, परचेस करने की जो कॉस्ट होता है, उसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट पे ऑलमोस्ट 50% डिफरेंस है.
and robust machine design because of no liquid path inside, innovative and integrated design for magnetic separation and pipetting system. And it's a very simplified mechanical movement, not very complicated, not even like fully automation, to be very honest with you. And it is very easy to use because the maximum procedure can be done within 30 minutes apart from 1 or 2 tests, and zero cost of analyzer, consumables of the analyzer. So ये आपको एक ज्यादा benefit देगा. Now going forward, एक glimpse of instrument operation. Instrument operation में बहुत आसान step है. The first, just add the sample and load. आपने एक tray में just sample cartridge को रखा. You have picked up the sample in the second stage. Just pipette in the sample OL. That's all. And place it over there and cover the slide. That is all. और कुछ करने की जरूरत नहीं है. And then next, you go to the software, and after going to the software, it's the 5 clicks. Go to test. Number 1, number 2, select the cartridges. Number 3, write the patient names. Number 4, you just give the patient more information, and you check out the sample types, what sample types are there. And then 5th is just click start. That's all. यही चीज है. And all the test menus are there in the brochure, but just for your understanding, at present all the blue parameters are available. At present we have launched, because launching immunoassay in India because of new MDR medical device rule, these are quite process oriented nowadays. So at present, at the first phase, we have launched the thyroid panels like TSH, T3, T4, FT3, FT4, and vitamin B12, folate, and ferritin, and vitamin D, and total vitamin D. We are very strong in fertility. Whatever the installations we have done as of now, maximum are in fertility cases. That is what I find. Fertility clinic पे अगर आप promote करेंगे तो बहुत सही निकलने वाला है, बहुत सही जगह पे hit करोगे इसको. We have a good fertility panel which is very affordable and very attractive to the gynecologists. They love to have it, to be very honest with you. Like AMH, LH, prolactin, FSH, progesterone, testosterone, E2, and total beta ECG is at present in our panel. And in cardiac panel also we have fantastic panel like HS troponin I, HS troponin, cardiac troponin T is supposed to be coming soon. That's what our marketing team has suggested us. And then normal troponin I, BNP, anti-proBNP, CKMP, myoglobin, HFABP and D-dimer. HFABP तो उतना इंडिया पे नहीं चलते, बाकी सारे टेस्ट चलते हैं. And LPPLA2 and ST2 we are going to launch. In inflammation we have PCT, that is procalcitonin T, and IL6 we are going to launch, and IgE we are going to launch. At present we don't have torch, उनको के पास है, but हम लोगों ने अभी launch नहीं किया. And in tumor markers we are going to come out very soon. फिलहाल नहीं है हमारे पास, because tumor marker process is very very long, because you have to take approvals from the authorities and all these are there. So that's why immediately we did not launch. So currently we have 26 parameters, almost another 11 parameters are in the pipeline, and more than 20 parameters are in development by TSEC. So that is what is the proposal at present. Okay. Now going to the most important information, आप तो मुझे ये पूछेंगे भाई आप कह रहे हो जो इतना टेस्ट कर सकते हैं, मैं रैंडमली टेस्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, देखिए रैंडमली तो टेस्ट नहीं हो सकता. इट्स अ लिटिल बिट बैच टाइप ऑफ एनालाइजर, बट आप ऐसे कर सकते हैं. वी हैव फाउंड देयर आर 8 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, 8 प्रोटोकॉल है. इट डिपेंड्स ऑन टाइम. अगर कोई भी ऐसे का टाइमिंग एक है और डिफरेंट स्टेप्स एक है तो हम एक साथ कर सकते हैं. जैसे कि आप मान के चलिए अगर प्रशनजीत का थायराइड करना है तो आप मेरा सीरम से you can do my TSH, FT3, FT4, T3, T4 together. एक साथ आप कर सकते हो, जो बहुत सारे मशीन पे नहीं कर सकते. To be very honest, I was finding जब हम कंपटीशन एनालिसिस कर रहे थे, मिनी फीडर्स पे you cannot do that. मिनी फीडर्स पे 12 चैनल तो है, बट 12 चैनल में you cannot do that together. आपको 3 स्टेज पे करना पड़ेगा. Similarly, I am taking other companies' name because you are our close distributor and you are our partners in the field. So I am not restricting myself too much because आपको competition मुझे दिखाना पड़ेगा.
जब हम आपको नहीं दिखाएंगे तो आप भी आगे बात नहीं कर पाएंगे. So consider it, it's like a little bit of technical information. Don't consider it like that जो हम किसी को बुराई कर रहे हैं. हर एक मशीन अच्छे है. Every machine is good. Everyone is having its advantage and disadvantage. So as a salesperson, we always try that to focus our advantages over others' negativity, right? आप भी करते हो, हम लोग भी करते हैं. इसमें कोई गलत नहीं है. But we don't say this like that. Other दूसरे कंपनी की मशीन खराब है. No. Other companies' machine also fantastic. Keeping all respect about the competitors, I am making the comment. Don't take it otherwise. मैं वही बोलना चाह रहा हूँ. So जैसे T3, T4, TSH, FT3, FT4 आपको 25 मिनट पे हो जाएगा एक साथ, खाली मेरा सैंपल. So this is the benefit. Now say some patients they want to do AMH, LH, prolactin and FSH together. They can do it 15 minutes. Various other assays like few tumor markers and total beta ECG takes 15 minutes. आप एक साथ कर सकते हैं. Like some fertility markers like progesterone, testosterone and E2 take 23 minutes. Folate takes 28 minutes. Vitamin B12 35 minutes and vitamin D is the highest 40 minutes. So this, very practically speaking, having troponin high in 15 minutes is a blessing, and that too accurate result, which is a numeric result, which is pretty accurate in CLIA, not in a immunochromatography method. It's a blessing. It's a blessing to have these parameters, which is fertility parameters, within half an hour, and it's completely thyroid and fertility together you can make in half an hour. So that is what is the benefit in front of the user. So this list is available with our field team. You can take a screenshot, or you can ask for it. We are obligated to provide this to you. हम आपको ये provide करें. Going forward, the validation. Yes, we have launched the instrument from this machine is developed by an organization called TSync, and TSync is operated by UNFO in India. So once we taken the machine, we have evaluated, validated it for 6 months into different hospitals. Initially, our internal evaluation has happened in our head office in Chennai. उसके बाद हम लोगों ने इसको field evaluation किया, and in field evaluation we validated in Clinova Lab Delhi against E411, which is from Roche. ये validation भी almost 3 महीना तक चला, and in different we have validated AMH, prolactin, FSH, LH, beta ECG, vitamin B2, multiple parameters. Because एक पेज में इतना ज्यादा देना मुश्किल था, तो only 6 I have put. So the correlation factors are very good. More than 95% is the correlation in many parameters, if you see. Now in Chennai, people, if they are from South India, Chettinad Hospital is a very famous hospital over here in Chennai, where we compared with Beckman's Access 2 analyzer and Access 4 analyzer against their FT3, FT4, TSH, vitamin D, HS, troponin I, and CKMB. And there also we got an extremely good correlation. We are happy. So this is the very basic, few things, information which we wanted to share with you. Now, in the next stage, I'd like to share you some market information and competition information and how to overcome the competitors. Again, please excuse me. I'm not trying to hurt any competitor. All are good, all are great. We are just trying to push our benefits over others, right? I'm trying to give you some points जो आपको मदद करेगा customer promotion. Because we have invited our distributors on majority. That's why I'm taking a liberty and discussing. Immunology market in India. I don't know whether you are aware or not. The Indian immunology market, it is around 4,223 crore as of 2021. Every year it is increasing quite well. To be very honest with you, around 20% is the CAGR of this market. And in CLIA and FIA market, which is contributing around 68.27% of the overall immunology business. This information is from Medical Buyer, which is ADI Media research publication. So we got this information. We can believe it almost. Now going forward to our market segment, we are not going to compete possibly with Maglumi. We cannot do in terms of cost per test. Maglumi customer to bade customer hai. The people who are going to purchase high-end cars, they are like that. हमारी segment तो छोटे segment है जो थोड़े से hatchback खरीदने की कोशिश कर रहा है. So this segmentation is different.
but of course competition तो face करना ही पड़ेगा market में. But initially we found that we have done an internal survey and from a very reliable source, our prediction, not guaranteed. The last year in 2022, almost 250 units of Biomedio was sold and around 190 units of Tosho sold. It is our assessment, our internal study. It can be more, of course. They can say it will not be less. Definitely, I'm telling you the minimum figure. And the total segment is around 400 to 440 to 500, 550 analyzers, where we want to push our instrument. Our expectation is first year to sell around 100 analyzers. That's all. We do not want to sell very high numbers. That will be very glossy and rosy picture. Possible nahi hota hai. So our objective is to sell 100 analyzers in first year. So if we can do it, we'll be happy. As being our associates, we seek your cooperation in this. Anyway, I'll show you some competition with Biomedio and Tosho, where we said that there are comparisons. A few information which you are able to analyze. All are 36 tests per hour throughput machine. All are batch analyzer. Apart from Tosho is a random access analyzer. That's the benefit. All methodologies are not CLIA like our machine. Our methodology is enzymatic CLIA, whereas Minividas and Tosho is based on immunofluorescence. Yes, there can be a debate. एक debate हो सकता है भाई immunofluorescence अच्छा है या CLIA अच्छा है. सच बोलो तो दोनों ही अच्छा है. Both are equally good. That is our lookout, and everyone uses their own technology to for doing the washing. That is not a common technology, but yes, there is no additional cost in ACCRE 8, whereas Biomedio PM kit is additional cost, and in Tosho there are multiple additional costs like wash buffer, pre-diluent, diluent, sample clubs, and so on. So the cost per test goes really very high. आप अगर देखेंगे तो next 2 slide में मैं comparison को थोड़ा और भी detail में दिखाने का कोशिश किया. If we compare with Biomedio, we found few interesting things. That majorly the long test time in Biomedio is very common. Like TSH के लिए you have to wait almost for 40 minutes, whereas हमारे लिए ACCRE 8 के लिए TSH is just 25 minutes. So that gives a benefit for the user. User के लिए काफी हद तक benefit होता है वो. Now going to the next point, if you see there are multiple points, I'll not go through all the points. Yes, the most important point is that you cannot do all thyroids together in Minividas. Like say for example, जैसे जहां पे मैं दिखा रहा हूँ 7th point पे आप देखिए एक example दिया हुआ है. आप अगर देखेंगे एक बेसिक थायराइड पैनल जैसे T3, T4, TSH, FT3, FT4 किसी ने ऑर्डर किया प्रश्नजीत के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, it requires 3 independent chambers. यानी कि क्योंकि एक चेंबर में आप TSH और T4 कर सकते हो, TSH और T4 के साथ आप बाकी पैनल नहीं कर सकते. सो ये जो एक चेंबर है इसमें आपने प्रश्नजीत का TSH और T4 चलाने लगा. नाउ यू हैव 12 चैनल, राइट? सो यू कैन डू अगेन FT3 एंड FT4 इनटू अनदर चैनल. चलिए टोटल 40 मिनट पे आपको 4 टेस्ट हो गया TSH, T4, FT3 एंड FT4. Now what about T3 then? आप T3 तो चला नहीं पाएंगे उसके साथ. For T3 you have to do once again another 40 minutes in another time, जहां पे आपको टोटल 40 plus 40 80 minutes लग रहे. So generally क्या होगा, for a small setup this is a complication. जहां पे एक डॉक्टर वेट करेंगे पेशेंट के लिए और पेशेंट डॉक्टर की चेंबर पे वेट करने वाले हैं. अल्टीमेटली 2 घंटे तक तो पेशेंट वेट करेंगे खाली रिजल्ट मिलने के लिए, जहां पे इधर पेशेंट विल गो बैक क्विकर इन द बैक इन द होम. So which is comfortable for the patient, comfortable for the doctor at the end. So this is the benefit what you will get in this analysis. So this is a big benefit. Apart from this, you in our machine you can do CKMB, I mean cardiac disease like HS troponin, CKMB, myoglobin and PCT in whole blood, which you may not be able to do in Biomedio. You have to check it. That's what we claim. You have to use serum, which is a negativity, because serum निकालने के लिए जब PCT एक sepsis marker है, and it's an emergency test, right?
पीसीटी भी इमरजेंसी टेस्ट है, ट्रोपोनिन आई भी एक इमरजेंसी टेस्ट है, सीकेएम भी मायोग्लोबिन भी एक इमरजेंसी टेस्ट है। तो ये इमरजेंसी टेस्ट में आप सीरम निकलने के लिए इमरजेंसी यूनिट पे कभी कभी रनिंग अ सेंट्रीफ्यूज इटसेल्फ इज अ ट्रबल, और ये 10-15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी लेने वाला है सेंट्रीफ्यूगेशन पे, आपको सीरम निकलना है तो that is not required in that case. So you can directly run simply whole blood. Now another point is that हमारे लिए ACCRE 8 के लिए maximum sample required is 75 microliter maximum samples, whereas in minividas there in multiple parameters you need 200 microliter serum or 250 microliter serum or 300 microliter serum. In many parameters, common parameters like thyroid needs 200 microliter serum. आपको ये चीज बहुत छोटा लगेगा, but आप हिसाब करके देखिए, having a sample of 200 microliter and doing 5 tests, that means only for thyroid panel you are going to need 1 ml serum. Sometimes in a different setups, having 1 ml serum is not easy. ये बहुत छोटे-छोटे पॉइंट है जो जो आपको जब कस्टमर के साथ बात करना है, यू कैन प्रमोट एंड यू कैन डिस्कस, व्हिच विल गिव अ स्मॉल बेनिफिट्स फॉर द कस्टमर, एंड एज अ होल पुटिंग आउट 5 small benefits becomes a big benefit for the user at the end, because cost per test is very comparable, very much comparable with minividas and ACCRE 8. Probably ACCRE 8 is little lesser in many parameters, so it will help you at the end in promotion. Okay, and regarding AIA 360, it's a fantastic instrument. But yes, pretty expensive instrument. It's almost double than the cost of our analyzer. And but yes, there are some difficulties. It's a very random access analyzer and have multiple benefits. But cost per test, if you per se see, there are multiple consumables like sample tip, sample cup, wash solution, diluent concentrations, and substrate purchase. You have to purchase a lot of things which will increase the sample cost. AIA 360 is a complex instrument. It has इसके अंदर पे एक हाइड्रोलिक सिस्टम है एंड वाटर चैनल्स है, लिक्विड चैनल्स है. लिक्विड चैनल्स, there is a possibility, though it's a great machine, I'm again saying, but the possibility of complications are higher in an instrument where there is liquid channels inside. So naturally the chances are high. Okay, and it does not offer HS troponin I and D-dimer and PCT and AMH. That is a very common test nowadays. And especially vitamin B12, vitamin D are not available. You can have a look, or if it is available, it is a very complicated process. It is a very complex procedure. So these are the negativities which you can discuss along with your customers once you are competing and doing the things. I have seen some customers worldwide, while discussing with the manufacturer, they were showing in certain countries, they are having parallel machine, like they have one AIA 360, and because of vitamin D and vitamin B12, they kept ACCRE 8. So like kind of this situation that is also there. And AIA 360 is a very high calibration oriented machine. Though the calibration stability is very long, but you have to do a high level calibration, that is 6-point calibration, and you have to repeat 3 times. So your cost per test effectively will become very high. So यही है इनकी competitive information. Now target segment, as I said, you can target in fertility centers, in future blood banks. Gynecology centers are very prospective for us. Medium-sized laboratories and hospitals, and cardiac and specialty clinic, and physician office and laboratories. I mean, where the physician is there and the small technician is there, they can really work on this segment. We are not telling you targeting a big lab, or at last, which is not written, as a backup machine for vitamin B12 or vitamin D into a big lab. That is also can be targeted, because vitamin B12 and vitamin B12 and vitamin D is not very common in multiple setups. So it comes sometime. So कभी-कभी जब आ रहा है उनके लिए एक बड़ा किट खरीद के रखना वो बड़ा complicated होता है. Now if I compete to Maglumi is once again a fantastic machine. But जो देखने की important चीज है, कस्टमर के पास वर्कलोड है ना. कस्टमर के पास अगर सही वर्कलोड है, अगर T3, T4, TSH उनको 100 टेस्ट जो मैग्लूमी ऑफर करता है उनको 1 महीने के अंदर पे खत्म करने की एबिलिटी है, हाँ जी, तो बहुत अच्छा मशीन है मैग्लूमी.
तो उसकी जो एक्सपेंसेस है वो वायबल बनेगा कस्टमर पॉइंट पे। बट अगर वो अवेलेबल नहीं है इतनी नंबर ऑफ टेस्ट, तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो भी रहा है, आपको भी पता है मार्केट पे, that half of the kit has to be thrown away or has to be reused in some malfunction malpractice way, गलत तरीके से किट को यूज करना पड़ेगा in that case, right? So why to do that? जिनको एक इनोवा, they don't need a Innova car, why they should go for an Innova? They should go for a smaller car and then जब फैमिली बढ़ेगा तब भी इनोवा ले लेना. So it is something like that. So we are positioning it in such situation. So this is our proposal, and if you want more information and more insights, of course, you can reach our field staff, and